माझं नाव ऋषिकेश आहे. माझ्या घरात माझी मम्मी आणि माझे पप्पा आणि माझा भाऊ राहतो. माझे पप्पा कंपनीमध्ये काम करतात. माझी मम्मी पण कंपनीमध्ये काम करते. मैं आंगनवाड़ी में गया नहीं, मेरा एडमिशन किया. मेरे मम्मी पापा ने मुझको ये हौसला आया कि मैं बड़ा होके पढ़ाई करके कुछ बनूंगा. मुझे किसी ने कहा था कि I could never do business. Not able to sell back then, I was not able to market back then. I seriously lacked business acumen. But now, I think I'm so confident, I believe so much in my product, I believe in my service. I think at a certain point when you have a strong belief in the skills, in the service and in your product, I think selling becomes way too easy. அவங்க படிக்கல, ஏன்னா அவங்களாம் படிக்க முடியல அப்படிங்கிறனால அந்த சுச்சுவேஷன்ஸும் அவங்களுக்கு அமையல. ஃபேமிலிலையும் ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கு யாரும் இல்லை. ஸோ அப்பா வந்து பார்த்திங்கன்னா 4th ஸ்டாண்டர்ட் வரைக்கும் தான் படிச்சிருந்தார். அம்மா 10th ஸ்டாண்டர்ட். ஆக்சுவலாக அம்மா அப்பா மேரிட் ஆனது 92. ஸோ என் பேர் எதனால சூரியன் வந்துன்னா, அப்பா வந்து ஒரு ரஜினி ஃபேன். ஸோ கல்யாணம் முடிஞ்சு ஃபஸ்ட்டு ஃபிலிம் அவங்க போகிறாங்க தளபதி. ஸோ அதனால தான் எனக்கு என் பேர் சூர்யான்னு வந்துச்சு. ஸோ அவங்க ரெண்டு மேரேஜ் பண்ணனால அவங்களுக்கு வந்து பையன் வந்து நல்லா படிக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிருக்கான். So when we started TIMESPRO over 10 years ago, there was no EDTECH as a phrase, right? You had a large number of underserved learners across the country who required training to get into their first careers. And that is where TIMESPRO saw the opportunity. Over time, as we evolved and as technology evolved, we managed to take that model and extend it to not just the early career segment, but also the executive education segment, and indeed even the enterprise and government learning segment. Banking is among the top 3 sectors of India. 78% लोगों ने बैंक अकाउंट तो खोल लिया है. सिर्फ 3% के पास क्रेडिट कार्ड है, 5% लोगों को लोन मिल पाता है. और ये सेक्टर ग्रो नहीं कर रहा है बिकॉज बैंक्स के पास सर्विसेबल मैन पावर ही नहीं है. इस समय बहुत हैवी रिक्वायरमेंट है मैन पावर की. बैंक्स को स्किल्ड मैन पावर नहीं मिल रही है. इसी गैप को देखते हुए हम एक प्रोग्राम लेके आए हैं जो कि बैंकिंग के मैन पावर को ट्रेन कर रहा है और बैंक्स की इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है. ஸோ அப்படி ஃபேமிலி அபவுட் ஃபேமிலினா, அப்பா வந்து ஆட்டோ டிரைவர், அம்மா வந்து ஹோம் மேக்கர். ஸோ ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு படிக்க வச்சாங்க. ஸோ அவங்களால படிக்க முடியல, ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கு யாரும் இல்லை அப்படிங்கிறத அவங்க நினச்சிட்டு நல்லா என்னை சப்போர்ட் பண்ணி படிக்க வச்சாங்க. இவ்வளோ தூரம் கொண்டு வந்திருக்காங்க. அதுக்கு பெரிய சப்போர்ட் வந்து அப்பாவும் அம்மாவும். அவங்க சின்ன வயசில் ரொம்ப ஸ்ட்ரகிள் பண்ணி தான் என்னை படிக்க வச்சாங்க. ஈவன் மோர் நவடேஸ் ஆல்சோ. பட் அவங்க 2 பேரும் ஆக்சுவலாக ஆசைப்பட்டது ஒரு சின்ன வீடு. நம்மளுக்குன்னு ஒரு சொந்த வீடு. மிடில் கிளாஸ்னாலே எல்லாத்துக்கும் தெரியும். ஸோ ஒரு சின்ன வீடுங்கிறது ஒரு பெரிய ட்ரீம். பேர் ராஜேந்திரன். 35 வருஷம் வண்டி ஓட்டிகிட்டு இருக்கிறேன். என் பையன் சூர்யா படிச்சுட்டு இந்த கோச்சிங் கிளாஸ்க்கு போகணுன்னா ஜாயின் பண்ணி விட்டேன். போய் எல்லாம் நல்லா இது பண்ணி நல்லா வேலைக்கு போயிட்டுருக்குறான். எங்களுக்கு சந்தோஷம். போஸ்ட் கிராஜுவேஷன் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது தான் எனக்கு தெரிஞ்சது இந்த மாதிரி ஒரு ஆர்கனைசேஷன் இருக்குது. அங்கே அதாவது ப்ரைவேட் பேங்க் வந்து எம்ப்ளாயிஸ் வேக்கன்சி ரெக்ரூட் பண்ணி அவங்களுக்கு ட்ரைனிங் கொடுத்து பேங்க் ப்ளேஸ்மெண்ட் கொடுத்துட்ருக்காங்கன்னு. ஸோ அப்படி தான் 2016 டைம்ஸ்ப்ரோ வந்தாங்க இந்துஸ்தான் காலேஜ் ப்ளேஸ்மெண்ட் ட்ரைவுக்காக. ஸோ அப்படி தான் நான் லாஸ்ட்டாக அதை அட்டன் பண்ணி அது செலக்ட் ஆனேன். செலக்ட் ஆகி 6 months கோர்ஸ் பண்ணியிருந்தோம் டைம்ஸ்ப்ரோவில்.
அது டைம்ஸ்ப்ரோவில் கோர்ஸ் பண்ணி they have give me many things as a basement of what is banking of basement. ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो हमारे पास आ रहे हैं वो टीयर 2 एंड टीयर 3 सिटीज़ से आ रहे हैं, बिकॉज बैंक्स की रिक्वायरमेंट भी उन्हीं जगहों से हमारे पास बहुत सारी आ रही है. द स्टूडेंट्स आर गेटिंग ट्रेंड एंड वर्किंग इन दीज सिटीज़. हमारी कंट्री ने राइट टू एजुकेशन पे बहुत काम किया एंड दैट इज़ हाउ एजुकेशन इंक्लूजन हैपन. बहुत सारी स्कूल्स खुली बहुत सारे विलेजेस में, बट ये सब विलेजेस में जो स्कूल्स हैं यहाँ पे फैसिलिटीज़ आर वेरी वेरी बेसिक. समटाइम्स बहुत सारी स्कूल्स में टीचर्स भी नहीं हैं एंड दैट इज़ वेयर द प्रॉब्लम इज़ कि दीज स्टूडेंट्स नीड टू compete विद द अर्बन स्टूडेंट्स. व्हेन इट कम्स टू IIT, IIM एंड ऑल दैट, तब तो उनको compete करना ही पड़ेगा. वो कैसे करेंगे अगर उनके पास में बेसिक एजुकेशन फैसिलिटीज़ ही नहीं है? सो दैट इज़ वाई we came up with the initiative that we can collaborate with the government and we can create smart class solutions all across India for thousands of schools. आणि माझ्या भावाने मला इंग्लिश, गणित आणि मराठी हे विषय आधी शिकवले. त्याच्यानंतर मी माझा अभ्यास करत गेलो. त्याच्यानंतर मग मी एक्झाम द्यायला तिसरीत आलो. मग माझे 100पैकी 100 मार्क आले. मॅडमने मला खूप शाबासकी दिली. माझा फेवरेट सब्जेक्ट इंग्लिश आहे. मला इंग्लिश बोलायला खूप आनंद होतो. आपल्याला ते इंग्लिशची गरज असते. कशाला सगळे ते शिकले सर बीर हे सगळे शिकतात ना, मग आपल्याला पण इंग्लिश शिकायला गरजेची असते. आपल्याला काम लागू शकतं इंग्लिशमुळं, म्हणून आपल्याला इंग्लिश शिकायला गरजेचं आहे. झालं म्हणून मी कॅम्प्युटर म्हणजे गुगलमध्ये मी सर्च केलं की कॅम्प्युटर कसं चालवतात. मग मला मॅडमने पण शिकवलं. मी त्या कॅम्प्युटरकडे खूप लक्ष केलं. मग मला TV पण चालवायला आली. मला इंग्लिश यायला लागली. मग मॅडम आता मला TV चालू करायला लावतात. त्याच्यावर धडे काय पण मलाच लावायला सांगतात. मला मैडम ने खूब शाबाशी दिली होती. स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने के लिए जैसे कि क्लासरूम पे हमें सिर्फ बोर्ड पे या फिर चौक का यूज़ करना पड़ता था या फिर सिर्फ ओनली बुक्स का यूज़ करना पड़ता था, बट अभी हमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट से बच्चों को पढ़ाने में आसानी हो जाती है. बच्चों को भी टेक्नो सर्वे करने में, उनकी क्रिएटिविटी बढ़ाने में, और कोई भी अगर कंसेप्ट होती है बेसिक कंसेप्ट तो उन्हें बहुत अच्छे से हमें उन्हें पढ़ाने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट भी आता है. बच्चों का भी स्ट्रेंथ स्कूलों में बढ़ गया है. जैसे कि पेरेंट्स और टीचर्स जो है वो ऐसे पढ़ाने में बहुत ज़्यादा उन्हें इंटरेस्ट लगता है. फक्त तू शाळा शिक, दुसरं काय नको. तेवढे पण पैसे लागतील, आम्ही तुला कसं पण करून देऊ. माझ्या शाळेत कम्प्युटर आहे, माझ्या भाऊच्या शाळेत नाही आहे. म्हणून माझा भाऊ खूप उदास होता, पण मी त्याला हौसला दिला. कधी कम्प्युटर नसला तर आपण काय पण करू शकतो. कम्प्युटर नसला तरी मोबाईलवर गुगल सर्च करायचं. आपण कसं शिकतो, आपण मोठं झाल्यावर कम्प्युटर घेऊन आपण खूप शिकू शकतो. मी त्याला असा हौसला दिला, पण तो लय नाराज झालता. मग मी त्याला असा हौसला दिला. माझ्या शाळेत कम्प्युटर आहे म्हणून मी खूप आनंद आहे. एक स्मार्ट सिटी में अगर स्मार्ट स्कूल ही नहीं होगा तो वो स्मार्ट सिटी कैसे बनेगा? तो हमने वो इनिशिएटिव उनके साथ में लिया, गवर्नमेंट के साथ में. मोर देन 100 स्कूल्स में हमने पूरा स्मार्ट क्लास डिप्लॉय किया. रोबोटिक लैब्स है, वहाँ पे वो पूरा टिंकरिंग के बहुत डिफरेंट इनिशिएटिव्स करते हैं. दे कम आउट विद डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स. I have been to some schools and the experience was really mesmerizing, because all these students, teachers, they were all saying that ये आप जो लेके आए हो इससे हम जिस लेवल पे जा सकते हैं अभी, we could understand that how happy they were when they could actually utilize all these equipments, all these facilities, all these ultra modern capabilities. The world talks about the next billion consumers. Where are those billion consumers going to come from? Over a third of them, we believe, will come from India. When we look at India, we look at a market of 1.4 billion people. We look at aspirations and learners who are over a billion in number. Across age and stage of learner life, across economic and social classes, there is aspiration. Whether you are an early career aspirant looking for your first job out of college, or you are looking for advancement in your career through skilling and upskilling,
there is a hunger for learning which is palpable in this country. I've been one of the early members to join this executive education team, and since then we've come a long way. The executive education business partners with top institutes like IITs, IIMs and other global universities to offer world-class programs to audiences in India and abroad alike. Having my own business actually allows me to spend a lot more time with quality time with my kids. I do what is really important, whether it is at work or whether it is at home, right? I can manage my time a lot better. I can be with my kids when they really need me. I can actually juggle between, work and home. There is no compulsion as such. When I know that my kids need me, I take work a little easy, and when my kids are settled, I push a lot more energy and time into my business. So it definitely allows me to strike that balance, right? The balance between work and home. What I gained through the IIM program, I would definitely also want to highlight this. My daughter has always seen me learning. Right? One thing that I really want to very strongly put across, not just my daughter but to everyone, there is no real age to learning. There is no need for anybody to stop learning at any points in their lives, right? Every 4 years, every 5 years, I definitely find something that, I update myself, I learn something new. There is no age to learning. Just give me 1 minute. Ma, your class is starting. I was a little worried because when she was teaching, we never got a lot of time, but I think now we actually spend a lot more time than we actually did before. So I am very happy with that, and she has always been there no matter what, no matter when. Nobody should stop learning. And this is one message that I want to strongly give out to my daughter, because, if you have a dream, there is nothing that stops you. You can just go chase your dreams, study, learn. It is actually a very proud feeling for me because a lot of my friends' parents, when I look at them, they are very surprised at the fact that my mother is still studying. So, because most of the parents don't, and I feel really proud to know that my mother still studies and she's getting so much knowledge every single day. And yeah, it is a good feeling to know how my friends come up to me and tell me how good of a teacher she is, how much she teaches them. And I don't have to really worry about going to somebody because I already have her. With a robust portfolio of over 100 programs, TIMESPRO is reshaping India's educational landscape. Its mission is not only to position India as a global powerhouse, but also position itself as a global leader in the online education space. இல்லை மறுபடியும் என்னோடய கரியரில் இன்னி ஃப்யூச்சருக்கு என்னென்னா நெக்ஸ்ட்டு மறுபடியும் நேஷ்னலைஸ் பேங்க் எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஸோ அதில் இன்னும் நிறையா கற்றுக்கிட்டு மோஸ்ட் நேஷ்னலைஸ் பேங்க்கில் எப்படி நான் டெவலப் ஆகி என்னோடய பர்சனலாக டெவலப் ஆகி என்னோடய ஆர்கனைசேஷனுக்கும் டெவலப் ஆகணும். ஸோ சேம் டைம் அது கரியர் க்ரோத் அதில் இருக்குது. நான் இது பண்ணிவிட்டு நல்லா ஃப்யூச்சர் பண்ணணுன்னு தான் आशा. मला आन्सर नाही माहीत असत मी ते घरी जाऊ म्हणजे शाळेत कॅम्प्युटरवर सर्च करून त्याचा आन्सर मला मिळून जातं. म्हणून मी माझ्या दिमागात काही पण येतं मग मी ते कॅम्प्युटरवर सर्च करून त्याचं आन्सर शोधतो. माझं पोलीस बनण्याचं स्वप्न आहे, पण मी आणि इंटरनेटवर गुगलवर कॅम्प्युटरवर सर्च करून स्मार्ट टी व्हीवर सर्च करून मी खूप मेहनत करून मी पोलीस बनणार. Thanks to this program, I think it gave me such a good hold on various functions of every business aspect, right? Meaning I could understand what is sales, the importance of sales, marketing, the importance of understanding your team, how to build your product, how to deliver your product, how to look at consumer experience, customer experience. In my case, it was more of a student experience. I could focus on so much more, understand and develop my product better, develop my skills and also capitalize on those skills and hence build a product. Right? So I would really say that the entire confidence of now running the business second time over was
totally because of this program through TIMESPRO, I think I have definitely developed the business acumen, and I now can confidently sell my program and definitely do well in my business. Industry academia interface is a phrase whose time has come, not only in India but globally. No longer can academia function insulated from the needs of industry. So today our problem of employability largely stems from the fact that our universities are not creating people with the skill sets required to actually survive in a job or even clear a job interview. What we need to look at as the EdTech fraternity is how do you bridge this gap? And bridging this gap becomes a very industry specific. So if I'm looking at the banking sector, if I'm looking at the supply chain sector, I need to be that interface between what industry actually needs, bring that back into curriculum, and then start fitting that into something which can be taught. So the pedagogy of the classroom is now actually more industry ready at TIMESPRO than it ever was before. So I think that really is the crux of what we do as a learning company. Whatever we do has got to connect back to the founding vision of TIMESPRO, which is learner centricity. In a country like ours, where we have aspirational population at every level, be it at early career, be it at executive level, be it at leadership level, we need to look at what the learner needs, and we need to be able to cater to the learner. As long as we are true to that credo of being learner-centric, we, along with the country, will grow as a super skilled organization.